Good morning everyone. So जो series टा start करते हैं vocabulary based fill in the blanks. सही series है मैं देखो तो next class में हमें start करेगा clause passage two words two blanks से बढ़िया. तो आज हमें बस सही जोड़िए जिनसे practice करेगा. तो good कि bad news जो अभी कहेगा कि हो चाहिए कि हमें total आज 8टा section means 8टा क्वेश्चन टाइप आम खाली अटेंड करिया जैसे 8टा क्वेश्चन काफी लंबा जदी स्पेशली क्लॉज पैसेज गुड़ा काफी लंबा कारण तार स्पेसिफिक पैटर्न था तो से गुड़ा केमती अटेम्प्ट करा जाए केमती ताको आमे माने तार आंसर गुड़ा केमती एलिमिनेट करे सेटा आज हमें देखिबा. एडिशनली हमें जो आज हमें कौन सी फिलिंग द ब्लैंक्स में मु तुमको स्पेसिफिकली टू वर्ड्स टू ब्लैंक्स ऊपर ही किछिटा क्वेश्चन करेगी एंड तापरे हमें मूव ऑन करबा क्लॉज पैसेज को. तो टू कॉलम टू वर्ड्स टू ब्लैंक्स तो आगो करेगारो जो मीनिंग का हेटा होची कि टिके आइडिया आसु कि गोटे सेंटेंस गुड़ा को केमिति में जदी मल्टीपल ब्लैंक्स होची ताको हमें केमिति अप्रोच करूछु तापर हमें क्लॉज पैसेज गले से माइंडसेट में जदा हमें अप्रोच करिया. एडिशनल में तो मैं उनको बतेबी कि अप्रोच करला को एआई जिंस पर ध्यान रखे रछि तो हमर क्लॉज पैसेज गुड़ा टिके बेटर और इजीली सॉल्व हो परिबो. तो आज हम स्टार्ट करबा क्लॉज पैसेज सॉरी टू वर्ड्स टू ब्लैंक्स में फर्स्ट स्टार्ट करबा टू वर्ड्स टू ब्लैंक्स. तो फर्स्ट होची देखो टू वर्ड्स टू ब्लैंक्स में कोन माने हमको दिया है तो जोड़े वर्ड देखो ईच ऑप्शन में गोटे कोन कराई छी जोड़े वर्ड दिया छी करेजियसली अलार्म्ड डेंसली डेजिग्नेटेड ब्राइटली टेरिफाइड मोरसली स्पिरिटेड सनीली और कलेक्टेड ये माने जोड़े वर्ड दिया है छी जो भी पेयर दिया है सी कोन कोची या भी गोटे पेयर will be used in this particular sentence. जोटी की फर्स्ट पेयर रे यान तो थ्रू फर्स्ट पेयर जोड़े जीवो सेटा एठी जीवो सेकंड ए पेयर में जोड़े जीवो सेटा एठी जीवो माने it should make a complete sense. The biggest mistake that students do over here is कि सेमन देखिले फर्स्ट करेजियसली अछि एठी काळे करेजियसली लागियो मन एग्जांपल ले कहू देखिए देखले पेटा करेजियसली से करेजियसली लागिला आउ ता देखिबनी अरे हां एटा करेजियसली लागियो लाग जाउची से सेकंड ब्लैंक देखिनी जेते सेकंड ब्लैंक्स देखिनी एटा गोटे सेंटेंस जो देहर गोटे कॉन्टेक्स्ट अछि सिंगल ब्लैंक सिंगल वर्ड किछि नहीं तमे थरे के देखले जानि जीवो कि एई वर्ड ता एठी जीवो से प्राइमरीली वोकैबुलरी पर डील करे कि एटा वोकैबुलरी प्लस कॉन्टेक्स्ट टेंस एटा सब ऊपर डील करे है. तो ध्यान में देखिबो कि पूरा सेंटेंस न पढिला पर्यंत तमे केबे भी आपको आंसर करने की चेष्टा करिबनी. पूरा सेंटेंस न पढ़िला पर्यंत तमे आपको केबे भी आंसर करने को चेष्टा करिबनी. अदरवाइज कारण सेम टाइप रो वर्ड्स में जोडे की गोटे फर्स्ट ब्लैंक रे जो माने एका भलिया वर्ड्स थिबो जोडे की जाई परिबो किंतु सेकंड वर्ड ठीक न होला तले आंसर टा भूल हे जो. तो देखिबा कि ए सेंटेंस को माने ए वाला सेंटेंस को केमते अप्रोच कराबो. ऑल्दो Epsom and evil capital letter start है जेतु एटा गोटे ना and evil गोटे ना are dash populated more than 2/5 of the Borgoi when common man is a dash as a green belt. Okay, so although Epsom and evil are dash populated देखो जोडी ऑल्दो आसीची सी माने देखियो ऑल्दो पर जो कमांड न थियो के ऑल्दो पर जो कमांड थाए सी कोन फर्स्ट जो टेंस जो टोन ता थियो से टोन को चेंज कर दो कंट्रास्ट बडा आनिमो. ऑल्दो माने कमा पर कंट्रास्ट आसो देखो ऑल्दो एप्सम एंड इविल आर डैश जहा थिबो more than 2/5 of the Borgoi is dash as a green belt माने एठी जहा जो तार कंट्रास्ट आसे हम देखिया कि कोथि कंट्रास्ट आसी पारिबो जेंति
although epsilon e वाला courageously populated, अच्छा populated संगे ये जो word टा अच्छी populated या संगे courageously तो आस्परियन courageously definitely courageously आस्परियन मतलब brave सही तो bravely तो किसी populated हुए नहीं तो या तो देखो गोटे ऑप्शन जो है तो भूले गला मैं आगो एटा काटी दबा अच्छा डेंसली पॉपुलेटेड हुए तो एटा है ही पारे ब्राइटली पॉपुलेटेड ही पारे ब्राइटली मतलब होती उज्जवल मे भी कहा पे ही पारे कहा पे जॉय पारे आमे एटा फॉर द टाइम बिंग रखे किंतु यार एते चांसेस नहीं ब्राइटली एते रखा है मोरसली माने दुख रे समथिंग बैड सैड हो गया मोस्टली सैडली पॉपुलेटेड जदि कि करो सर सैडली पॉपुलेटेड भी तो ही पारे जदि कि ताको कहा को ठीक लगथो रखिए मे बी सनली यदि ब्राइटली हो तो सनली ही पारे कारण ऑलमोस्ट ब्राइटली सनली को तुम ने कहबो कि हां एटा ही सब ब्राइटली जदि ही करतो सनली ही करबनी राइट सो लेट अस सी मोर देन 2/5 ऑफ द बोर्गोइड इज डैश एज ग्रीन बेल्ट अच्छा ग्रीन बेल्ट माने जोठी माने एंड डेजिग्नेटेड एरिया जोठी की तमे माने जोडी घास फूस कि माने गछ फूस सब प्लांटेशन हुए ताकू केही डिस्टर्ब करंते हैला तो आमे जे कंसीडर करिबा टेरिफाइड ग्रीन बेल्ट तो हबनी डेजिग्नेटेड हेई पारे एटा हेई पारे डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड एरिया सेटा टेरिफाइडली तो केबे नो स्पिरिटेड हेई पारे कि स्पिरिटेड एज ना स्पिरिटेड हबनी स्पिरिटेड एज ग्रीन बेल्ट तो केबे हबनी ना तो एटा भी हबनी टेरिफाइड भी हबनी एंड कलेक्टेड एज ग्रीन बेल्ट बोर्गो इज कलेक्टेड एज ग्रीन बेल्ट कलेक्टेड हुए नहीं ग्रीन बेल्ट गोटे डेजिग्नेशन मतलब कि एई बेल्ट रे एटा हो जंदे हमें कहू एटा होची हमर ए जो वोल्केनिक बेल्ट जोटा हो किबा एटा गोटे ए जो ट्रेन में जो ए जो बेल्ट हो एटा कोल माइनिंग बेल्ट गुडा सो जो डेजिग्नेटेड एरिया तो कलेक्टेड तो हो देखो एठी ही तीनटा रही कोटी गला तो गोटे रही गला जोटा होची डेंसली एंड डेजिग्नेटेड तो एटा ही करेक्ट आंसर बुझि पालो जदि तुम देखछला खाली डगु एटी कंफ्यूजन है डेंसली भी पारे मोस्टली माने टिके दुख सहित बैड फीलिंग्स है माने पॉपुलेशन विषय जे कहउती कि मे बी कि बैड फील करि पारे क्या के को ब्राइटली माने ब्राइटली पॉपुलेटेड माने बहुत उज्जवल माने बहुत हैप्पी खुशी से बेले भी पारे so जब तुम फर्स्ट कंसीडर करते हो मे बी देयर इज अ कंफ्यूजन चांस ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड बट द सेकंड कंफ्यूज करते हो माने सेकंड वाले कंसीडर करते हो मात्र गोटे ऑप्शन विल टर्न आउट टू बी योर आंसर एंड there it is. So this is how we should approach 2 words 2 blank questions. Acha for the next question I'll give you 15 seconds, give it a try, tapare we will try and discuss this. A particularly dash focuses on the idea of a fully developed form in Aristotle's dash of humans derives from its dual role. Humans derives from its dual role. ठीक है जी देखो 15 सेकेंड फॉर यू ठीक अच्छे लेट्स स्टार्ट तो the particularly dash focus on the idea of a fully developed form in Aristotle's dash Aristotle को कौन होते okay of humans derives from its dual role ହେଲା Aristotle को कौन करथिले Aristotle basically जने
फिलोसोफर थे तो से आइडिया गुड़ा को आइडिया गुड़ा बहुत फेमस था आइडिया को आइडियलाइज कर बहुत लोग लाइफ में प्रोग्रेस करथिले एबे भी करूछंती सो बेसिकली अ फिलोसोफर हु इज वेल रिनाउंड फॉर हिज आइडियाज तो particularly dash focus on the idea of a fully developed form in Aristotle. अच्छा, particular dash focus on the idea. Focus dash focus की प्रकार focus. Elegant focus ही परिवो. Elegant focus ही परिवो. Dapper माने neatly dressed focus. कहाँ को करे लगी पारे कि neatly dressed focus but neatly dressed focus generally हुए नहीं. prominent focus माने giving more importance primary focus जोड़ा कहती है पारे एटा भी गोटे चांसेस अछि एटा होबार spruce रो अर्थ होची neat and clean focus neat and clean डेपर करछो तले मे भी कहा को spruce हे पारे formal focus के संगे केबे भी formal जाए नहीं फॉर्मल फोकस और प्राइमरी फोकस ही पारे जब कहा को इंपोर्टेंट कोचो कोन जिंसटा को इंपोर्टेंट को तो प्राइमरी फोकस ही पारे किंतु फॉर्मल फोकस जोटा कि ऑलमोस्ट आमो मे बी इन आर लैंग्वेज की अन्य कोन लैंग्वेज रे मे बी फॉर्मल फोकस द राइट साउंड को इंग्लिश रे फॉर्मल फोकस डजंट साउंड राइट ठीक है तो फिर भी जदी कार कोसी थिबो कि नहीं मु फॉर्मल फोकस लिखा चाहूँ ठीक अच्छे आम रखीद तो आम प्राइमरी जोड़े भल कैंडिडेट होती सी आउ ए बाकी सब गुड़ा फर्स्ट ही किसी गड़बड़ अच्छी इन एरिस्टोटल डैश ऑफ ह्यूमन मनीष मान कौन तो एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन हो पार हाँ एटा भी ऑपरेशंस ऑफ ह्यूमन ऑपरेशन माने ह्यूमन काम करवा ये स्टाइल ऑपरेशन डिवाइस फ्रॉम दिस डुअल फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ एरिस्टोटल्स कि मनीष केमिति काम करे से ही पारे ठीक अछि ठीक है एटा भी रखि दो किछ नै एरिस्टोटल्स डैश ऑफ ह्यूमंस डिराइव्स डिस्कशन ऑफ ह्यूमन डिराइव्स डिस्कशन ऑफ ह्यूमंस टिके बेटर साउंड होची तो एटा भी हे परियो एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमंस ना एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमंस तो केबे भी हबन तो हमें स्प्रॉस्टा काटी दबा तो फॉर्मल अट्रैक्शंस ऑफ ह्यूमंस एरिस्टोटल्स अट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ना एरिस्टोटल्स अट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन कान से फिलोसोफर से डिस्कशन करथले तांकर आइडियाज गुडा को से समस्त को बुझौतले शोधले तांको पॉपुलराइज करथले तो अट्रैक्शंस तो एठी हबन तो आमर एठी कोन फर्स्ट होची डेपर जो मैंने नीटली ड्रेस्ड फोकस तक केबे हबनी तो आई विल हैव टू एलिमिनेट दिस तो स्प्रॉस गला एडी फॉर्मलिटी भी हमें एलिमिनेट कर देथबा कारण ए जोड़ा को होनी तो हमर पे रहला ए आउ सी एलिगेंट फोकस ऑन द आइडिया एम्बिशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग हे परबो डिस्कशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग हे परबो तमे ए जोड़ा भीतर कि छोड़े परबो एलिगेंट किमा प्रोमिनेंट द particularly माने कौन बहुत फोकस्ड एक्सट्रीमली माने वेरी स्पेसिफिक पॉइंट यदि वेरी स्पेसिफिक पॉइंट होची स्पेसिफिक संगे एलिगेंट आसीबो की स्पेसिफिक संगे एलिगेंट जहां माने होची स्टाइलिश एलिगेंट अर्थ को स्टाइलिश कि कहतो स्टाइलिश फोकस हो पारे किंतु पर्टिकुलरली स्टाइलिश फोकस कभी होगी पर्टिकुलर जब हम कोन पर्टिकुलर जिंस ऊपर हम ऐसे फोकस करू छे तो सेठी बेसी हबो प्रोमिनेंट जोटा इंपोर्टेंट तो पर्टिकुलरली देखो लिखिले चला पड़ जो प्रोमिनेंट focus on the idea of a fully developed form in Aristotle's discussions कारण discussion word थिला discussions of humans derives from its अच्छा जो कॉमा थिले बेटर था ना of humans derives from its dual role make sense
एलिगेंट होची स्टाइलिश पर्टिकुलर स्पेसिफिकली स्टाइलिश बोली किछि तो टिके आउट ऑफ टोन लगुची तो आम एटा को इजीली एलिमिनेट कर दे परिबा तो वन दैट इज द आंसर इज प्रोमिनेंट डिस्कशन होची प्रोमिनेंट एंड डिस्कशन क्लियर चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई टू द नेक्स्ट वन इन समर the region is bathed in a dash of sunlight with a midnight sun that dash sets अच्छा एटा कदी तुमने पढ़ी जो midnight sun जब एटा तुम पढ़ी तो तुमने ऑलमोस्ट यार आंसर तुमने तो मिल गई सारी बन तो तभी give it a try 15 seconds alright start करियो एटा को जे मिडनाइट सन विषय पढ़ी थे भी तो मिडनाइट सन को आमे गोटे फ्रेज है मिडनाइट सन नेवर सेट्स मिडनाइट सन नेवर सेट्स गोटे फ्रेज था जदि पढ़ी थी ताले तमे इमीडिएटली एटा पाई जाई थो चलो ठीक अछि तमे पढ़ी न let's say you midnight sun देखिए जानी नो किसी पढ़ी नो let's use the first blank in summer रे the region is bathed in dash of sunlight so summer रे sunlight रे bathed मतलब गाधी पड़ी छी को प्रकार sunlight ही पड़े vengeance माने कोन vengeance रो अर्थ कोन माने निजर शत्रु माने निजर शत्रु ऊपर प्रतिशोध नबा तो vengeance of sunlight तो हबनी दे काट दियो साइलेंस ऑफ सनलाइट तो केबे हबनी वेंजेंस नहीं तो वायलेंस हबनी एब्सेंस तो बिल्कुल हबनी एब्सेंस ऑफ सनलाइट अबंडेंस माने फुल ऑफ अ लॉट ऑफ अबंडेंस ऑफ सनलाइट विद अ मिडनाइट सन दैट नेवर सेट्स द आंसर इज हियर क्लियर है लॉजिक ये किंबा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रे भी आंसर सॉल्व हो जाय पारुची maybe you do not know about midnight sun but तमे भी समर विषय रे देखुछो आ bathed विषय रे समर रे सूर्य से कोई सूर्य किरण रे bathed माने गाधी पड़े को प्रकार सूर्य किरण तो बहुत अधिक सूर्य किरण तो abundance is the correct answer let's try the next one this has a dash both local population and the rest of the world with rising sea levels and dash weather events. This has dash both local population and rest of the world. एटा local population और पूरा world को भी किसी वोटे करिची with rising sea levels and the dash weather events. तो एथु जणा पड़ची किसी ना किसी ट्रबल सम लागुची कारण राइजिंग सी लेवल यदि समुद्र स्तर बढ़ी जाए तो निहाती आम मन प्रॉब्लम ही पाए तो एटा सही कंसर्न ऊपर की छोड़ थाई पारे एनीवे 15 सेकंड गिव इट अ ट्राई देखिए कोन होची हमर होची आंसर होची हमर होची अबंडेंस एंड एवर ठीक अछि प्रियंका सामल से कहउछनी की होबा यार आंसर अफेक्टेड एक्सट्रीम ठीक अछि
अच्छा तो चलो स्टार्ट करिए. लेट्स होप प्रियंका सामल राइट ही था. चलो दिस इज इंस्पायर्ड भी तो ही परिबो. ठीक अछि ए रे अछि इंस्पायर्ड एटा ही परिबो. तो एटा में रखतबा फर्स्ट पे. दिस इज कैप्टिवेटेड. कैप्टिवेटेड माने कोन बांधी के रखि देछि माने लोकन को अटेंशन को पूरा बांधी के रखि देछि. तो कैप्टिवेटेड बी. दिस इज कैप्टिवेटेड बोथ द लोकल एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही पारे. अमेज्ड. दिस इज अमेज्ड. समस्त को अमेज कर दी पारे. लोकल लोकन को पूरा वर्ल्ड को अमेज कर दे पारे. डिप्रेस्ड हमको लागू जी छोड़े राइजिंग सी लेवल एटा तो एटा भी तो ठीक है पारे. अफेक्टेड. अफेक्ट भी ही पारे कि एटा समस्त को हमको भी अफेक्ट करछि वर्ल्ड को भी अफेक्ट करछि लोकल पॉपुलेशन को अफेक्ट करछि. विथ द राइजिंग सी लेवल्स एंड डैश वेदर. आर्केन अर्थ होछि अति पुराना वेरी ओल्ड थॉट आइडियाज और थिंग्स. आर्केन. आर्केन वेदर इवेंट्स हो कि वेदर थिंग किसी आर्केन हो कि ना. जदि एवरेज वेदर होछि तबे एटा कांकी कहार कंसर्न हो. वेदर तो ठीक ही अछि एवरेज अछि ना भलो ना खराब किंतु एटी हमर ओडे किछि ओडे कंसर्न इवेंट देखाउ जे राइजिंग सी लेवल तो एटी एवरेज ता होबोनी. तापर अछि एब्स्ट्रू. एब्स्ट्रूज होछि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एब्स्ट्रूज जो अर्थ होछि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो ठीक अच्छी ये गोटे भल कैंडिडेट हो गला. ये गोटे भल कैंडिडेट. अमेज्ड. दिस इज अमेज्ड एवरीबॉडी है. अमेज्ड एवरीबॉडी राइजिंग सी लेवल से अमेज्ड हो जाइए. आउ तक एब्स्ट्रूट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वेदर इवेंट्स पे से बहुत ये हेते पारे. डिप्रेस हो जाइए किंतु सुप्रीम माने बहुत भलो वेरी गुड जिनसर कैसे सुप्रीम माने डिप्रेस कर तो एटा तो होबनी. अफेक्ट हे करे एंड एक्सट्रीम. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स माने एक्सट्रीम वेदर माने वेदर गुडा बहुत अधिक माने इवेंट्स गुडा बहुत अति गरम किमा अति ठंडा अति वर्षा ए सब जिंस होची. तो एटा भी देखो this has this has amazed both local populations and the rest of the world with rising sea levels and abstruse weather events. Hey pare this has affected both local population and the rest of the world with rising sea level and extreme weather events. Eta B hey pare. So the chances of Priyanka Samal being right is 50-50 now. देखो तो कौन. अच्छा दिस हैज अमेज्ड. अमेज्ड माने माने आश्चर्य हो जाइछंती. लोकल लोक भी हो जाइछंती एंड पूरा वर्ल्ड भी हो जाइछि जेतले सी लेवल राइज करूची आउ वेदर इवेंट गुडा काफी अनप्रेडिक्टेबल होछि. आश्चर्य कहि जिबे चिंतित हो परंती. दे कैन बी दे माइट बी वरीड. जदि एमरा किछ होला सी लेवल राइज में हमें भी वरीड हो. सो दे कैन बी वरीड. But why should they be amazed? Amazed तो खुशी भी पर amazed में आश्चर्य. So amazed because हे पारे कि लोक माने करते but a context रे amazed तो ठीक पोस्ट. So this was the wrong one and yes this is the correct one. Affected. This was affected and extreme. Extreme weather event, right? So yes, this is the correct answer. E. Next. Acha. Now we will try clause test. Clause test mane two column two blanks two words ro ame dekhile. Jemti seta ko approach kale कि first we read the entire sentence
understood the context बुझिला परे हम देखले से context रे कोई word fit होची तुम देखले multiple words can be fit into one blank, but when we are considering the entire context there is only one option जोटा कि contextually grammatically fit होची तो सही एई जिंसटा को मन रखो two words two blanks जोटा ताको मन रखो भाबो तार टिके बड़ वर्जन सेठी गोटे सेंटेंस ला जोथरे जोडे वर्ड रिमूव करायला एथे गोटे पूरा पैराग्राफ थो जोथरे कि किछि वर्ड्स रिमूव करा जायतो आ ताकू भी अप्रोच करिया हमें जनरली गुड जनरल अंडरस्टैंडिंग कहबो कि हमें ताकू से पूरा कॉन्टेक्स्ट जानि सरला परे ही अप्रोच करिबा अगेन मु कहबी जेमती मु कहली two blanks two words by without reading the entire sentence will not decide ki which is the correct answer. Seventy for clause test it is mandatory that without reading the entire passage do not decide on what the answers should be कारण आंसर्स गुड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड हेतो 5टा की 6टा क्वेश्चन दिया हेतो गोटे पैसेज देतो तापर 5टा की 6टा क्वेश्चन दिया हेतो देन यू हैव टू लुक इनटू कि ए ब्लैंक रे कोनटा जाउची बट इट हैज टू गो थ्रू द कॉन्टेक्स्ट इफ द कॉन्टेक्स्ट इज नॉट क्लियर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ताहले तमर आंसर गुड़ा काफी भूल हे जो तार कुछ स्ट्रेटजीज थाय क्लास क्लासेस सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजीज फर्स्ट कोन जी देखो की स्ट्रेटजीज फॉर solve clause test first होची read before acting प्रथमे पढ़ो it will take time first read it will take time first read कारण हमर मार्क स्कोर करियर अछि तो सेति पे हमको करेक्ट करियर अछि त हमने कॉन्टेक्स्ट बुझियर अछि सो read first scan the entire passage first without looking at the option आरे चाहिबो नाही this helps you to grasp the central theme and the author's tone हमें author's tone central theme किछि करियर नाही किंतु जब न बुझिबा कॉन्टेक्स्ट ता हम हातरे आसीबनी को टोन ने कहौ जे पॉजिटिव अछि नेगेटिव अछि डिस्कशन होछि क्रिटिसिज्म होछि किछि बुझ परियम जदी ता हमें ऑप्शन केमि चूज करिया तो फर्स्ट रीड बिफोर एक्टिंग आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ु जुवा बेले हमें देखिलबा एटा प्रेजेंट रो डिस्कशन होछि पास्ट रो डिस्कशन होछि कि आउट डिस्कशन होछि प्रेजेंट हो पास्ट हो कि पास्ट परफेक्ट होछि कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस होछि आगो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर देबा इन कोडी का पर फोकस करे वर्ब ऊपर नाउन ऊपर एडजेक्टिव ऊपर एडवर्ब ऊपर इन देला हम टेंस भी क्लियर हे जो हम टेंस पर जानि गेले एगुला सब हमें जानि दिबा कि कोटा कोटी हे केमती यूज होछि यूज द बिफोर एंड आफ्टर रूल अच्छा बिफोर एंड आफ्टर रूल कौन look at the words immediately surrounding the blank they often contain clues such as specific prepositions देखो केमती interested in जेंति हम पूर्वट रे कहले यदि कोन पर्टिकुलर ऊपर कोन वर्ड लिखे छी पर्टिकुलरली माने स्पेसिफिकली बहुत पर्टिकुलरली कहले ता सेटा दैट वाज द क्लू जोतर के हम जानि पले एटा हो आंसर आटा काफी जनरल थिला एटा हो आंसर हो सही भलिया से कोजी इंटरेस्टेड पर सबले इन ही लागियो प्रोहिबिटेड पर सबले फ्रॉम ही लागियो तो जदी हम तुम लिखला वर्ड ता प्रोहिबिटेड होता पर तुम यदि अच्छी ब्लैंक तुम इमीडिएटली जान पड़ो सेटा फ्रॉम लागियो तो फर्स्ट यूज बिफोर एंड आफ्टर पूर्वरु कोन लिखा छै ब्लैंक पूर्वरु कोन लिखा छै ब्लैंक पर कोन लिखा छै आगे पढिबो तापर डिसाइड करियो व्हाट सिग्नल वर्ड्स पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड अच्छा ट्रांजिशन कौन देखो दी प्रकार ट्रांजिशन थाए गोटे जो कंट्रास्ट वर्ड्स मु पढे चलची तम यदि माने नोट्स बने अछि ताको पॉज करी तुम पढे देखियो हला कंट्रास्ट वर्ड्स है कौन बट हाउएवर येट ए वर्ड रहिले कंट्रास्ट हो कंट्रास्ट माने कोन माने ए वर्ड पूर्वरु जो टोन थिवो वर्ड पर सेटा चेंज हे जो वर्ड पूर्वरु जो इंटेंशन थिवो ता वर्ड पर सेटा चेंज हे इट इज कंट्रास्ट माने उल्टा हे जो है सेमेदी कंटिन्यूटी माने जहा टोन थिवो जहा आईडिया थिवो जहा जेंती ऑथर ओपिनियन रो कंटिन्यू हो माने ऐड हे जो केमिदी मोर ओवर थिवो सिमिलरली थिवो एई भले वर्ड थिले
indicates the idea is staying the same, माने जहाँ डिस्कशन होता है सही डिस्कशन ही कंटिन्यू हो, एगुड़ा को पहले इंडिकेट देयर इज अ शिफ्ट इन आइडिया, शिफ्ट माने चेंज होची, आगे उल्टी होची कि मैं जहाँ डिस्कशन करछु से डिस्कशन किछि अन्य ओडे डायरेक्शन हमरो डिस्कशन जीवो। तो एगुड़ा काफी इंपोर्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट एंड कंटिन्यूटी वर्ड एगुड़ा ठीक है लिखि दिजो, तमे चाहे निज रिसर्च रे भी आहुरी कॉन्ट्रास्ट एंड कंटिन्यूटी वर्ड गुड़ा भी तमे पाइयो। नेक्स्ट अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड, आमे एपर्यंत भी एलिमिनेशन मेथड रे ही लिखुतले, आमे एलिमिनेट करि जाउथले जो गुडा ठीक हो ताको आमे बाहर कर देले, त जोटा रहि जाउथले सब ठीक। दैट इज वन ऑफ द परफेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, कारण आमे इजीली फाइंड आउट कर कोन हबनी, ह्यूमन माइंड सिंपल डिजाइन हे गछि कि आमे फर्स्ट भूल टाइम देखि परिया, तो आमे फर्स्ट देखिबा एटा हबनी तो कर दियो जहां एटा दैट इज द आंसर हैला। फोकस ऑन कोलोकेशन, कोलोकेशन में कोन केमिति कुहा जाउछि, मेनी वर्ड्स आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पेयर्स। देखो इन बैंकिंग एग्जाम्स एस्पेशली recognize the business English like mitigating risk और narrowing the gap। बैंकिंग एग्जाम का काफी फॉर्मल था, तांकर बिजनेस इंग्लिश में बेसी फोकस था, तो एई भलिया वर्ड्स प्राय से मैंने यूज करो, मिटिगेटिंग रिस्क, नैरोइंग द गैप, तो एई जो वोकैबुलरी जो था बैंकिंग रो सेटा जदि तमे जानि गेलो ताहले सेटा भी इजी कर दबो, हमर केमते आंसर होला से करो। एसएससी रो अलगा था, एसएससी माने फॉर्मल इंग्लिश ऊपर बने। एंड ऑफ वीडियो रे एंड रे मु तुमको बते देबी, क्लास एंड रे मु तुमको बते देबी कि डिफरेंशिएट केमते करबो एसएससी इंग्लिश और बैंकिंग इंग्लिश भितर। ऑलराइट, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ऊपर टिके फोकस करबो। सिनोनिम्स रो अर्थ कोन, सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग नो, सिमिलर मीनिंग, सिनो सिमिलर, मीन्स मीन्स सिमिलर मीनिंग, same meaning हो, so distinguish between synonym. If two options means the same thing, look at the intensity and context, जोड़ा मैं भी करथले context ऊपर फोकस करथले। ए context कोन है, लास्ट जो टू ब्लैंक टू ये करथले, फर्स्ट ब्लैंक देखो सब तो कहि जो everything can go in the first blank, second blank देखला बेलू से भी चेंज होला, राइट। तो इंटेंसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट ऊपर फोकस करो, जदि तमरो सिनोनिम जदि अछि जदि देखो फर्स्ट ब्लैंक सबुडा जाउछि, सेकंड ब्लैंक रे जल्दी गला से ता ऊपर फोकस कले हे जो कॉन्टेक्स्ट देखि कि तमे कोन को वर्ड एडी बसो, राइट। द फाइनल सैनिटी चेक, एटा टिक ऑडियो सैनिटी माने जे पागल नुहो माने जो क्लियर अछि, फाइनल सैनिटी चेक। Once all the blanks are filled, most important point, final sanity check is the most important point. Once all the blanks are filled, read the complete passage aloud. It should sound like logical, cohesive piece of writing. If a sentence feels clunky, re-examine your choice, है ना। पूरा कंप्लीट कर सारा पूरा ऊपर तले पुराना पढ़ियो, जदि पढ़िला तो तुमको लागला नहीं किछि गोटे गड़बड़ लागुची, किछि गोटे गड़बड़ अछि, ताले जो गैप पर गड़बड़ लगता का आउथरे री एग्जामिन करिवो, ता कॉन्टेक्स्ट देखियो, बिफोर एंड आफ्टर ताको एग्जामिन करियो, बिफोर एंड आफ्टर लॉग एग्जामिन करियो, तापर पुणी ताको टेस्ट करिवो आ गोटे ऑप्शन देकी, तापर पुणी पढ़िवो, पुणी पढ़ला एथो ठीक अछि, गो अहेड सबमिट द आंसर, अदरवाइज check until you get it right। बेसी टाइम लागियोनी, कारण तुम जब प्रैक्टिस करि जाउछो तुम हार्डली 5-6टा क्लास पास जब 2-3टा क्लास पास गोटे ब्लैंक तारे कोन हे पारे, असेंबली क्लास पास गोटे ही आसीओ, हैला क्लास पास आसीओ गोटे ही आसीओ, तो तादरे माने चांसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स रॉन्ग इज वेरी लेस। चलो लेट्स प्रोग्रेस, लेट्स सी हाउ क्लास पैसेज इज डन। अच्छा, क्लास पैसेज पूर्व जो इंस्ट्रक्शन है, क्लास पैसेज इंस्ट्रक्शन है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, पैसेज इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स माने मल्टीपल ब्लैंक्स अछि, ईच ऑफ व्हिच हैज बीन डिनोटेड बाय अ लेटर, प्रत्येक ब्लैंक को गोटे लेटर किंबा नंबर, एठी लेटर दिया अछि किंबा नंबर, बेले बेले नंबर भी थाए, नंबर फॉर
each blank 5 options are given. केतोळे 5 केतोळे 4 डिपेंड करे आमे 5 ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन में देखिए 5 किंबा 4 भी कोन होची बराबर था are given. Choose the most appropriate word from the options that fits the blank. गोटे blank रे फिट करया पई गोटे ऑप्शन हैला पूरा पैसेज अछि तागर 4टा की 5टा ब्लैंक छाड़ दैछन्ती 5टा की 6टा ब्लैंक छाड़ दैछन्ती तो आमु कोन करया अछि आमु देखिया अछि प्रत्येक ब्लैंक पे 4टा की 5टा ऑप्शन रहबो से ब्लैंक रे कोटा कोन वर्ड प्रॉपर्ली बसियो तो माने से पूरा पैसेज था गोटे कोहेसिव हिथरो एंड इट शुड बी लॉजिकल माने बुझी करतो तार कोन एक्चुअली लिखा है ठीक है देखो जी गोटे पैराग्राफ पैसेज देखो बुझी जो एटा होची गोटे क्लस्टर. In a healthy office environment, it is important that senior employees dash. एक थोड़े letter होची, तामने A dash टा होची A. ठीक है. Guidance and support to their juniors. Newcomers often feel dash when trying to understand their roles and responsibilities. A helpful senior can dash the learning process by sharing experience and providing useful tips. This not only builds confidence but also dash stronger team relationship. When juniors feel respected and dash, they are more likely to contribute effectively. Hence, mutual cooperation and mentorship are dash for maintaining a productive workplace. है ना तो ये जो पैसेज टा अच्छी से पैसेज इज रिलेटेड टू वर्कप्लेस एनवायरनमेंट जो कि पुराना एम्प्लॉय भी अछंती नुआ एम्प्लॉय भी अछन से को जे नुआ एम्प्लॉय माने आसीबे तांको जे इंक्लूड करा जिवो तो तांकर कोन इंक्लूड करा गले तांकर एतिकी तो आइडिया पाइए कि माने इंक्लूड करा गले से माने बहुत वेलकम फील करबे ताले से माने भी कंपनी रे काम करे पे ताको इजीली फील लागिवो आ तापर से माने भी इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करि परबे तबे इट्स अ वेरी पॉजिटिव टोन में अछि पैसेज ता कि एठी माने गोटे हेल्दी ऑफिस एनवायरनमेंट ऊपर कहि जाउ आ हेल्दी ऑफिस एनवायरनमेंट इन अ वेरी पॉजिटिव टोन तो देखिबा अच्छा प्रत्येक ब्लैंक पर गोटे गोटे तो एठी हमरा 6टा ब्लैंक अछि तो प्रत्येक ब्लैंक रो गोटे लेटर अछि आ आमो जो क्वेश्चन आसुची इट इज समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट फिट्स इन ब्लैंक ए ता माने हमें खाली ए टा को ही कंसीडर करियो तो हमें वेरी पॉजिटिव पैसेज ताको जहां भी लागियो सो इंस्पिरेशनल पॉजिटिव कि वेलकमिंग ए भले वर्ड सब लागियो तो को अछि in a healthy environment it is important that senior employees dash guidance and support to juniors तुम मैंने भावो यदि आगे ऑप्शन देखोनी छाड़ में आगे मैंने भावो यदि गोटे भल ऑफिस एनवायरनमेंट हेबो तादर सीनियर लोक माने जूनियर लोक माने को कोन करिया कथा हेल्प करिया कथा ना हेल्प करिया कथा तांको सिखेबा कथा एई सब सब तो ठीक अछि देखिए कोन कर अछि सीनियर एम्प्लॉई डैश गाइडेंस एंड सपोर्ट टू देयर जूनियर से माने तांको दबा करा गाइड आमे जानि तार तो कोन एम्प्लॉई माने सीनियर एम्प्लॉई माने गाइडेंस एंड सपोर्ट जूनियर एम्प्लॉई को दबा कथा देखिए तो फर्स्ट कोन करी डिमांड मागिबा कथा नुह ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट किछि पोसु किछि एम्प्लॉई ग्रोथ गाइडेंस कॉन्टेक्स्ट किछि फिटी हो ऑफर माने दबा कथा हेई पारे रिव्यू गाइडेंस एंड सपोर्ट गाइडेंस सपोर्ट को रिव्यू करिया कथा मन ताको क्रिटिस माने टिक स्क्रूटिनाइज करिया कथा कि भाई कोन गाइडेंस सपोर्ट केन देउ हां हेई पारे किंतु से को एबे आगो समय ऑफर कले से माने ठीक सिखिले कि नहीं सेडा देखियो सेटा को रिव्यू करू छिबो किंतु इनिशियली कोन हमें गाइडेंस दबा कथा तो रिव्यू हबनी रेट तो डेफिनेटली हबनी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लागु तो हमर यार आंसर है ऑफर है ना yes Priyanka Sawal you have got it right तो यार आंसर होगा offer next अच्छा in a healthy office environment it is important that senior employees dash guidance and support to their juniors
Newcomers often feel dash when trying to understand their roles and responsibility. जो मैंने नुआ जॉइन करथांदी से मैंने प्राय टाइम डैश फील करंती जेते बेले से माने ता निज रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को बुझिया को चेष्टा करबे कोन फील करछे डर लागि परथो कंफ्यूज फील कर परथो किबा अनसर्टेन फील कर परथो ए वाला किछि तो डर लागतो किबा कंफ्यूज लागतो तो कोन हो आज हाँ तो फर्स्ट है अच्छा नर्वस हाँ ही पारे एटा नर्वस ही पारे एटा गोटे नर्वस ही पारे हाँ एटा गोटे ही पारे लेजी तो डेफिनेटली फील करिवेनी एम्प्टी माने भितरु खाली ना सेटा बेसी डार्क हे होची ए कॉन्टेक्स्ट एटा ठीक बसनी एंजाइटी ही पारे एटा भी ही पारे एंजाइटी ही पारे मैं बेसी एंग्शियस फील कर परंती एंड कंप्लीट यस कंप्लीट फील कर तो एटी कोन होची newcomers often feel dash when trying to understand their role अच्छा तांको रोल को बुझिया गले कि मतलब रेस्पॉन्स बुझिया गले कि तांको टिके अनकंफर्टेबल लागि पारे अच्छा जो माने काम करेला सन से माने ऑलरेडी तो सिखी किस तो गोटे एक्सपेक्टेशन आस्ते कि हां एटा हेतो सेटा हेतो एमिति हेतो सेमति हेतो मते एया बुझेबे मते से करेइबे मोर ए काम हेतो टिके आइडिया थियो किंतु तथापि टिके डर लागे हैला एंजाइटी टे टिके एक्सट्रीम टिके बहुत अधिक हो जाए মানে অতি ডর হয় তো এই কনটেক্সটে এনজাইটিটা ফিক্স বসিবনি এটি হবো নার্ভাস often feel nervous when trying to understand their role and responsibility okay yes perfect next in a healthy office environment हमने बहुत से फास्ट पढ़िले मोर कॉन्टेक्स्ट मने होची in a healthy and office environment it is important that the senior employees provide or offer guidance and support to their junior newcomers who newcomers often feel nervous when trying to understand their roles and responsibility a helpful senior can dash the learning process by sharing experiences and providing useful tips जने हेल्पफुल जो सीनियर जे हेल्प करूचंती से कोन कर परबे से ई प्रोसेस टा को कोन कर परबे किछि मात्र हेल्प कर दी परिबे बाय शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल टिप्स से निजर एक्सपीरियंस और यूजफुल टिप देबे ए जो प्रोसेस टा अछि न्यू कमर माने आसी कि तांको रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बुझिया ए जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बुझिया ए प्रोसेस टा को से टिके सहज कैन मेक इट इजी ठीक है सहज कर दी परिबे लेट्स सी सेटा जदि हबो डिले तो हबोनी कंफ्यूज तो डेफिनेटली करबेनी रिक्रूट माने कोन काहागु माने चाकरी रे तमे चाकरी पे रिक्रूट करिया कथा तो ए कॉन्टेक्स्ट रे ठीक होसुनी गेस तो करबेनी सहाय्य करिवे सहाय्य पे स्पीड वो स्पीड का लर्निंग प्रोसेस टा को स्पीड अप करिवे माने इजी करे देबे तो एटा हबो ई स्पीड अप द प्रोसेस yes this is also correct now next देखिए fourth one in a healthy office environment it is important that the senior employees offer guidance and support to their juniors newcomers often feel nervous when trying to understand their roles and their responsibility. A helpful senior can speed the learning process by sharing experience and providing useful tips. This not only builds confidence but also dash stronger team relationship. Acha, but also dash stronger team relationship. What is so it not only builds confidence just खाली confidence नहीं but also not only what also माने कौन एटा नो या संगे एटा बी यानी कि कंटिन्यू करछि आइडिया कंटिन्यू करछि स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशनशिप भी डेवलप करूचंती स्ट्रॉन्गर एडी बिल्ड करूचंती कॉन्फिडेंस डेवलप करूचंती स्ट्रॉन्गर टीम रिलेशनशिप कौन होबा एठी ब्लॉक तो होबनी परस्यूज माने फॉलो करूचंती स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप करथिबे ठीक है मेबी काले परस्यू हे जाई पारे जदि आ किछ नथिबो fulfilled stronger fulfilled
past tense fulfill hitile maybe hi kana kintu stronger team relation thake eta bi out of context laguchi fosters mane kon encourage eta bi pare fosters stronger team relationship eta bi hi par to eta bi gote option hi pare instigate माने instigate रो अर्थ होची कि कहा गोटे तमे ब्लेम कला भया कि कहा गोटे ब्लेम तो नो माने कहा गोटे तमे माने पिन कला भया कि भाई तू एटा कर तमे कहा गोटे instigate करछ कि तो भूल हे कहा गोटे से भया तो instigate का काफी नेगेटिव अछि खास करतो कि instigate का नेगेटिव आ एटा पूरा पॉजिटिव तो सेठी पे स्टोरी काट दे पर तो देखुछो तले हमर परस्यू से पारे फॉस्टर्स हे पारे परस्यू माने फॉलो करिवो हैला किंतु से गोटे स्ट्रांगर सी ऑलरेडी कुछ बिल्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करिवो आउ स्ट्रांगर रिलेशनशिप भी बिल्ड करिवो तो ऑलरेडी एनकरेज करिवो इट इज एटा कॉन्टेक्चुअली फॉस्टर्ड बेटर लगी परस्यूज टू परसिडियस फॉलो कला कॉन्टेक्चुअली फॉलो कहीं करिवो तो ऑलरेडी वर्ड बिल्ट होची फॉलो कहीं करिवो तो कॉन्टेक्चुअली एटा ठीक बसुनी दिस इज द आंसर fosters stronger team relationship next acha in a healthy office environment it is important that the senior employees offer guidance and support to the junior newcomers often feel nervous when trying to understand their roles and responsibility a helpful senior can speed the learning process by sharing experience and providing useful tips this not only builds confidence but also fosters stronger team relationship when juniors feel respected and dash they are more likely to contribute effectively मतलब सब पॉजिटिव होची जेतले जूनियर माने को लागे कि हां भाई हमको भी रेस्पेक्ट दिया होची हमको भी इक्वली सब माने जेमते अन्य को ट्रीट करछ हमको से ट्रीट करछ से कहले दे आर मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करि पारिबे तो कोन ताकू ये लागियो तो माने इक्वली भी ट्रीटेड तो एटा से अडहेड माने लाखिक माने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करिया स्ट्रिक्टली काइंड ऑफ रूल फॉलो करबे एठी एक कॉन्टेक्स्ट रे जदि ऑफिस रे अडहेड रूल को अडहेड हुए माने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो कर दे ए कॉन्टेक्स्ट रे जस्ट पर्टिकुलरली ए कॉन्टेक्स्ट रे एटा ठीक बसुनी वेलकम हाउ को वेलकम फील कला मतलब एक्सेप्टेड फील करला लगे टायर्ड नेगेटिव हो जी रेगुलेटेड अडहेड restricted negative regulated and other जदि वो ऑफिस कॉन्टेक्स्ट रे ठीक किंतु ए जो पैसेज कॉन्टेक्स्ट रे एटा भूल माने कॉन्टेक्स्ट रे ठीक बसुनी तो रेगुलेटेड होबनी कि अडहेड होबनी ऑफिस वो रेगुलेटेड ही पड़े ऑफिस को अडहेड करा जाय पारे किंतु एठी से कहबो जूनियर माने जदि रेस्पेक्टेड आओ वेलकम्ड फील करिवे माने एक्सेप्टेड फील करिवे ताहले से माने इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करबे तो हमर आंसर होबो वेलकम नेक्स्ट होची in a healthy office environment we will लिखिलो जे लास्ट senior employees offer guidance support to the junior newcomers can often feel nervous when trying to understand the roles and responsibilities. A helpful senior can speed the learning process by sharing experience and providing useful tips. This not only builds confidence but also fosters strong team relationship. When juniors feel respected and welcomed, they are more likely to contribute effectively. Hence, mutual cooperation and mentorship are dash for maintaining a productive workplace are important. Therefore, hence mutual cooperation and mentorship are most important for maintaining productive workplace. एटा मुंडका से होची कि हां एटा कहता these are most important for maintaining productive workplace. हैला सही एटी कोन आसे आर इंपोर्टेंट कि वेरी इंपोर्टेंट ही दियो तो कहला क्रिटिकल ही पर कारण क्रिटिकल अर्थ बी हां इंपोर्टेंट ही पर इंपोर्टेंट
नॉमिनल माने माने अल्प टिके बहुत कम तो एटा नो उल्टा हो जाउची एनालिटिकल एठी बसनो मेंटरशिप और एनालिटिकल फॉर मेंटेनिंग एट द कॉन्टेक्स्ट इन बसनो एटा बोल अच्छा एठी होची एक्चुअल 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 अर्थ होची एटा जो माने कॉमर्स थे सब जानछे एक्चुअल होची टू एक्युमुलेट मनी फंड से बड़ा कॉमर्स टर्म कमर्शियल टर्म था sorry accumulate LATE to accumulate commercial term to होची accumulate तो सेटा एठी कमर्शियल टर्म ता जेतु एटा किछि सेटा माने मिनिमल अगेन नेगेटिव আছে সেটা হবে এটা হবে তো the one that is there is critical देखिबा सब बेले पढी माने करि सरला परे always read it so that it make तमे 100% sure हो कि एटा ठीक अछि In a healthy office environment, it is important that senior employees offer guidance and support to their junior. Newcomers often feel nervous when trying to understand their role and responsibility. A helpful senior can speed the learning process by sharing experience and providing useful tips. This not only builds confidence but also fosters stronger team relationship. When juniors feel respected and welcomed, they are more likely to contribute effectively. Hence, mutual cooperation and mentorship are critical for maintaining a productive workplace. And context-wise, sentence-wise, it looks perfect. So, we have got all the answers correct. So, if you got like last for okay. So, let's try another clause passage. Time consuming, but we got all of them correct. Let's try another clause passage. Acha. Read it. I'll give you 30 seconds. 30 seconds में तो पढ़ियो, आराम से पढ़ियो. Acha, let's start then. There is a saying that coming events cast their shadow before. Okay, dash. It is not universally true. Acha, so कुछ बड़े कहावत अच्छी that coming events cast their shadows before. जहाँ हबार थो ता पूर्व तोनु टिके आभास है जो. किंतु कोची it is not universally true. देखो मैं ये पढ़ुची मो मन भी आसे से कोची किंतु कहूची से एटा सबले ठीक न ता माने एई जो किछ तो एटा थिबो जोटा कि एटा को कंट्रास्ट करतो माने चेंज आइडिया को चेंज करतो कि टोन चेंज करतो हैला it has to be opposite. Select the most appropriate option for blank number 1. तो सही भाई it is not universally true. Therefore एटा कंट्रास्ट नो एटा कंक्लूड करिया पाए यूज रे. Furthermore, in addition एठारे किछि चेंज होबो से कंट्रास्ट माने उल्टे रहउछि एडी इन एडिशन ताको ऐड कर दउछि कोटे कोन कोथि कंट्रास्ट करथिबो गोटे थिला ऑप्शन थिला कंट्रास्ट थिला आ गोटे कोन थिला कंटिन्यूएशन एडी देखो एडी नहीं जाउछि
एठी देखो कॉन्ट्रास्ट वर्ड कंटिन्यूटी वर्ड है तो आमको दरकार कॉन्ट्रास्ट कंटिन्यूटी नो है तो এটা कंटिन्यू कराना कंटिन्यूटी कराना হলাম এটা লিখো मोर ओवर again मोर ओवर माने again एडिशनली आउ अधिका तो एटा भी सही एडिशनली कंटिन्यूटी को गोटे रह गला हाउएवर एटा के कॉन्ट्रास्ट सो दिस इज द आंसर तो एटा हो हाउएवर है अच्छा वन टा है ना हाउएवर there is a saying that coming events cast their shadows before, however it is not universally true. Something can happen within a second and one may not dash it. मतलब कि एमिति भी परे कि गोटे सेकंड रहिते एही जो किंतु केही भी डैश सेटा को माने कोन हेई पारे हेई जो कि के जानि परिबेनी ए जो माइंड रे कि जानि परिबेनी देखि परिबेनी बुझि परिबेनी कि भात परिबेनी सेठी कोन होची कि जदि जो होबार थाए आगु लोक जाना पड़ जाए तो से को जे सेन सब ट्रू नो एमिति के गोटे सेकंड रहि तुम के जानि परिबेनी कि आगु कि भात पर नथिबे कि भात परिबेनी से बळे तो कोन होची एठी होची रिसीव्ड फोर्सी लीगलाइज अफेक्ट अच्छा रिसीव्ड रो अर्थ होची कोन रिसीव्ड रो अर्थ होची ऑफिशियली डिक्लेयर करिवो कोन जिंस फेरे आनिबा किबा कंटिन्यू करबा को रिसीव कराओ कंटिन्यू रेफर आनी रिसीव तो ऑफिशियली डिक्लेयर फोर्सी to see future see before actually और जिन सभा पूर्व देखिबा legalize to make legal our affect to make to affect को गया to have an impact ये to have an impact ठीक है तो एठी आमे को आगुरु देखै अथु तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट फोरसी दा ठीक होछि टू सी बिफोर टू नॉट फोरसी इट माने इफ समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकंड एंड वन मे नॉट फोरसी इट मैं आगुरु देखिपर चाहि परबे तो कारण से आगुरु को कॉन्टेक्स्ट कहछि कि कौन जिन होला पर हमें आगु बुझी पार हम जानि पारथुवा किंतु एठी कहूची सेटा सब ठीक ठीक न होते पर बेले एमती हेइछो कि किछोडे हेइ तो लोक आगु जानि नेछ तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ए कॉन्टेक्स्ट ओनली दिस इज द करेक्ट वन नेक्स्ट there is a saying that coming events cast their shadow before however it is not universally true sometimes something can happen within a second and one may not foresee it dash some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong dash some instances किछि instances देखौछि कि से ए आइडिया तो कंटिन्यू करछि कि लोक जानि पार नथिबे dash some instances show that prediction based on certain signs have gone wrong कि आछि देखो जी एमिति बहुत इंस्टेंस अछि जोति कि किछि गोटे प्रेडिक्ट करथो हैला प्रेडिक्ट करथो कि से कोन से गोटे साइन देखि कि प्रेडिक्ट करथो कि आभास करि कि गोटे किछि गोटे प्रेडिक्ट करथो कि सेटा भूल हे थाय पर है तो से को बुझी
कि तुम न जानी परबो आ एठी से कुछ आगु एमिति ही थे माने एमिति बहुत जिंस अछि जोटे कि माने बहुत इंस्टेंसेस अछि किछि इंस्टेंसेस अछि जोटे कि लोकन प्रेडिक्ट करथि कि सेला भूल हेथे देयरफॉर अगेन सेला कंक्लूजन पे यूज हुए मोर ओवर इन एडिशन माने आउ भी हाउएवर एटा कंट्रास्ट पे यूज हुए nevertheless ता एठी ए कॉन्टेक्स्ट यूज होबनी even though एवला होची even एटा को ठीक लिखियो even though भया एटा nevertheless even though भया होची ए कॉन्टेक्स्ट ठीक होसोनी moreover in addition एटा additionally एठी moreover आसीबो देखो moreover some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong हैला माने आउ भी देखा जाउची moreover in addition आउ भी देखा जाउची कि लोक माने भूल प्रेडिक्शन करि जल्दी ए कॉन्टेक्स्ट के अपन फिल करछि लेट्स गो एटा कोन एटा गला भूल हेतला ठीक so there is a saying that however it is not universally true some can happen may not foresee moreover acha somehow people generally say that natural calamities can be predicted by observing the animal है ना जब कहते नहीं कि जब भूमिकंप हो तमे कुकुर मन बिहेवियर देखि जानि परबो कि पिंपड़ी मन बिहेवियर देखि जानि परबो सेगुडा people generally say that natural calamities can be predicted by observing the animals but what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before events appears हां हेतै पारे किंतु যদি ওটা কোনসি জীবজন্তু যাহা भी कहउछो যদি ওটা কুকুর কিছু বেমার হইছি তাহলে কিন্তু সে বেমার যোগু সে কোনসি অ্যাক্টিভিটি যদি ন কলা তাহলে কোন হবে they may fail to make peculiar sound or action about events which are going to take place সেগুলো যে যে কোন দিকে কোন জিনিস হলা পর জଣା পড়ি যায় কুকুর মানে ভুকন্তি সে সেই জিনিসটাকে রেফার করে কইছি এটা দেহ খরাপ এগুলো কুকুর দেহ খরাপ আছে তাহলে মেবি সে সেভাবে কোন সাউন্ড করিবনি जोटा से इवेंट आसुची जना पड़े डैश some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omen तापर कोची एटा होलो तापर कोची some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omen ओमेन अर्थ कोन ओमेन अर्थ होची केमती करा ए जो पूर्वाभास माने कोन सोटे जो कहंतनी तमे से गोटे कला बोले रोड क्रॉस कले गोटे खराब यो हबो सेईटा जो कोन सेई साइन टा को कहंती ओमेन बैड ओमेन कहंता हला से कोची एपर में से कहता भूलुची ए जाय कहता भूलुची माने से प्रेडिक्शन करिया भूल हला तापर कोची किंतु एठी कोची से अन्य गोटे उपाय भी करि पारे some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omen से अन्य गोटे उपाय भी करि पारे bad omen एपर में कोची से आगुरु जणा पड़ी होची से कोची गोटे साइन ऊपर आसी किछ गोटे खराब हबार जो संकेत गोटे बैड ओमेन सेटा देखि भी पारे तो कौन करिया तो एटा को पुनी सिक लागे एमिति ही पारे नले एमिति ही पारे तो कौन करै सर देयरफॉर तो अपन किछ कंक्लूड करले तो सेडी एटा होबो सेकेंडली ही पाथंता किंतु यदि आप पूर्व किछ फर्स्टली फर्स्टली हमें लिस्ट कोन लिस्ट जदि हमें करूचे से लिस्ट देखिया पाए हमें सेकेंडली फर्स्टली एवडा सब यूज करे फर्स्टली सेकेंडली यूज करे तो एठी जे फर्स्टली नहीं सेकेंडली हमें यूज करि परिबानी ठीक अछि गोटे एडा यूज होई पाथांता
nothing wrong in that, किंतु हम जो ऑर्डर था फर्स्टली सेकेंडली था तो एठी जेतु नाही. Besides, in addition to, in addition हो ता छड़ा बी in addition एटा ही करे in addition. Despite अर्थ होची ता बिना, to remove everything. ओके, despite एटा हबनी कारण से कहूची कि किछि गोटे आउ गोटे प्रकार एक्सप्रेस करिवो. Despite एठी हबनी आउ गोटे एक्सप्रेस न कर दै था मे बी despite नेगेटिवली पड़े था ना, किंतु करेंटली एठी besides एटा या छड़ा आउ गोटे कोन हे परिवो तो एटा beside रे आछी. So this is the only one that fits the context, so एटा हबो besides. Right, very good. Yeah. Priyanka Sam, correct. Next. There is a saying that before the however, it is not universally true. Something can happen within a second and one may not foresee it. Dash, some instance, moreover, besides. Besides, some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omen. Dash, we should not completely cancel out the possibility that animals can sense certain unnatural happenings. चलो जी, ये भी है. चलो जी, finally, हमें एक इंसोटा, we should not completely cancel the possibility that animals can sense certain unnatural happenings. क्या मैंने से कोची माने एनिमल माने आगु देखिए जण नहीं पारंती जदि एनिमल देह खराब है मेबी से जण नहीं पारे किंतु सेमिति नहले अन्य कोन उपाय भी हम जानि परबो. तो सेडी लास्ट क्वेश्चन, तो आमे एटा पूरा पूरी आमे कैंसिल कर दे परबानी कि एनिमल मानन द्वारा ए जो सेंसिंग जेटा होई परछि पर एनिमल सेंस करि परछंती से आमे पूरा पूरी डिस्कार्ड कर दे पारिबा नाही. तो आमे कर दे परबे फाइनली. तो कंक्लूडिंग है कौन हमर था फर्स्ट ही देयरफॉर थिला. हाउएवर हबनी कंट्रास्टिंग आछि, नेवरदलेस एठी हबनी, मोरओवर एडिशन करियार नाही, इवन दो सॉल्यूशन. सो दिस इज द आंसर देयरफॉर. देयर इट इज. देयरफॉर थोड़े पढ़ दबा. There is a saying that coming events cast their shadows before. However, it is not usually true. Something can happen within a second and one may not foresee it. Moreover, some instances show that predictions based on certain signs have gone wrong. People generally say that natural calamities can be predicted by observing animals, but what if animals are suffering from some disease and don't show any signs before the events appear? They may fail to make peculiar sounds or actions about the events which are going to take place. Besides, some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omen. Therefore, we should not completely cancel out the possibility that animals can sense certain unnatural happening. Context wise and sense wise जोड़ा जातो एटी ठीक बसुची. So we got all the answers correct. This was the final check. Final check का करिया निहाती दरकार. Otherwise you are bound to make mistake. कारण आमे तथापि भी गोटे माने पॉइंट टू माने गोटे ब्लैंक देखि आमे पढुचे. कॉन्टेक्स्ट ता आमे जानुचे एटा दरकार. कॉन्टेक्स्ट ता फुल्ली जस्टिफाइड होबा दरकार. किंतु जेपर पूराटा न पढिचे आमे जानि परबेनी कि आमे पूराटा ठीक करिचे ना नाही. ओके. Now, so तुम कही that I tell you the difference. मैंने कहा पर फोकस करिया अछि. देखो कोई डिफरेंस अछि जदि हम तमे बैंकिंग पे करजो कि एसएससी पे करजो एतिक मन रखो. पैसेज जो आसीबो जो हमें जो क्लॉज पैसेज विषय रे कहूची जो पैसेजेस आसीबो बैंकिंग रे
इकोनॉमी फाइनेंस टेक्नोलॉजी और एडिटोरियल ऊपर बेसी फोकस आसीबो हेले एसएससी ता बेसी स्टोरी बेस्ड हिस्ट्री और जनरल साइंस ऊपर फोकस करे जब तुम एसएससी पर जब एसएससी प्रिपेयर करछो त तुम से भी टॉपिक ऊपर बेसी फोकस करो बैंकिंग एग्जाम प्रिपेयर करला को एक भी टॉपिक पर बेसी फोकस करो तमरो क्लास पैसेज क्लास टेस्ट ता तमे ऑलमोस्ट तम कॉन्टेक्स्ट इजीली बुझा पे सहज होबो इवन एगुड़ा तमरो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जोटा आसे ता धरे भी एप्लीकेबल डिफिकल्टी लेवल कौन रहउची हाई रहउची बैंकिंग में टिके हाई रहउची काहे की कारण इस कॉन्टेक्स्ट हेवी पूरा फोकस ता कॉन्टेक्स्ट पर थाए ए कॉन्टेक्स्ट रे केमिति होची माने ए कॉन्टेक्स्ट कोटा ठीक बसे सेटा होची जेला फर्स्ट क्लास पैसेज जोड़ा करथि जेला पूरा कॉन्टेक्स्ट ऊपर हेवी थिला तो सेटा थिला बैंकिंग सेकंड होची एसएससी रे मॉडरेट काहे की कारण ग्रामर है ग्रामर का इजी होची हमें जानि हमें ग्रामर टा को स्पॉट करे ग्रामेटिकल मिस्टेक स्पॉट करे इजी तो कंसीडरेबली सेटा डिके मॉडरेट ही रहिबो की स्किल्स कोन लॉजिकल कंसिस्टेंसी माने बैंकिंग एग्जाम में जेतो तुम क्लोज पैसेज करू छो या फिर लॉजिकल कंसिस्टेंसी टा ठीक रहिबो लॉजिकली करेक्ट साउंड करूथबा निहाती दरकार आ एसएससी रे वोकैबुलरी एंड इडियम्स ऊपर बेसी फोकस आसे हैला वोकैबुलरी इडियम्स ता पर बेसी फोकस आसे तो एटा होची एसएससी एग्जाम सीजीएल सीएचएसएल तुम प्रिपेयर करछो these are the areas that you should be looking into तो आज ही पे एतिकी will continue with PYQs and other different kinds of question I will try to माने जो बहुत जल्दी मु रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को केमिति अप्रोच करा जिवो केमिति ताको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करायतला कोड पिला ने मिस्टेक करतले काहे की मिस्टेक करतले से ता ऊपर भी गोटे क्लासेस नेवा को चेष्टा करबी हमर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अछि हमर पैराजम्बल अछि जोतरे के पिला ने इजी थिले भी बेरे कंफ्यूज हो जानती तो हम सेडा ऊपर भी फोकस करियो तो आज पे एतिकी हैव अ ग्रेट डे